So let's start with the today lecture. So actually, this slide is about what we have already discussed in the previous lecture. What is the actually the outcome of the broglie equation, and today we are going to apply this knowledge to calculate the angular momentum of the electron moving around the nucleus. And the electron is a particle, and we will calculate how it is going to show the wave-like properties if it is moving around the nucleus in a circular path. So it is the rotational movement of the electron around the nucleus, and then the momentum would be the angular momentum. And here we have, according to the broglie equation, it is just the momentum mass into velocity, and he derives the formula how the mass is related to the wavelength, and it is called the wave-like properties of the particle. So I have put some more information and revise the previous one slide. So according to these all we have already discussed. So be remember or keep into mind, if whenever we are moving forward, you must remember the previous knowledge. That's why you will understand in a better way. Otherwise, you will be sitting and just watching what I am going to explain here. So according to the broglie equation, an electron is bound to the nucleus. That means it is having the standing wave or the stationary wave, because this is not like the electromagnetic radiations traveling from one point to an other point, because the nucleus is fixed and the electrons are moving in a fixed circular. That's why when it is moving in a fixed circular, it is going to emit a stationary or the standing waves, not the moving or the electromagnetic waves. So the other one we have already discussed some points, because it is coming from the actually the understanding from the strings of the guitar that we use as a reference to actually show what type of the wavelength is there when there is the fixed end. So there are some sort of the nodes, and these some points on the string do not move at all, where the amplitude of the wave is zero, and actually this is called the wave, nodes. So the fixed end are not counted as the node. So if I say how many nodes are there, no nodes, Shabash. And how many nodes are there? One nodes, and there are two nodes. So actually, of course, at the end, the velocity or the movement is zero. But generally, we do not consider it as a node, because actually we are going to compare uh, what is actually the outcome from the nodes is coming, and it is in the next outcome, and that is the greater the frequency of the vibration, shorter will be the wavelength and greater will be the number of nodes. So that's why in here, at here, the number of nodes are more than this one. That means the wavelength is short as compared to this wavelength, and this wavelength is short as compared to this wavelength, because the distance between the two ends remains the constant. And in a similar way, the distance between the nucleus and the electron will remain the constant in a specific element. This is not going to change. So that's why we are going to refer this as a reference to calculate the number of nodes, and nodes are important to correlate this with the frequency and the wavelength. If there are more nodes, that means the frequency is fast and the wavelength will be shorter according to the Planck's constant, Planck's equation. The integral of half wavelength fits into the length of, that is called the L. Total length is the L, and integral of half wavelength. It may be half or integral of half. This is going to fit according to the three examples are written. There is no third option is available. That means half ka half agar 1 lambda by 4 hai, this is not going to exist. Okay?
टोटल आपके पास लेंथ जो है वो यहाँ पे यहाँ तक एल है, तो मिनिमम क्या है यहाँ पे हाफ लैम्डा है, एंड देन इट मे बी लैम्डा और इट मे बी 3 लैम्डा ओवर 2 और 3/2 लैम्डा में, ये इसी का आपके पास जो है वो नंबर आगे चलेगा। वेवलेंथ की वैल्यू लास्ट पे हमने एक्सप्लेन किया, इट मे बी एनी वैल्यू, it may be fractional, it may not be a fraction, may be the odd number, may be the even number, but important here is understanding is the number is integral, that means what is multiplying with the wavelength, it should be the same, it may be the 1, it may be a 2, it may be a 3, so it will continue simultaneously. Like here integral number is in this case is for the first case is 1 and the second case is 2 and the third case is the 3, इसी तरह जो आगे जाएगा तो ये फिर वेवलेंथ उसके अंदर फिट आएगी, अगर इसका फ्रैक्शन आएगा तो एंड ही नहीं होगी, so that's why this case is not possible. So it is impossible, again what I have explained, to create a wave with any other value of the wavelength if ends of the strings are the fixed. अगर वो फिक्स है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अदर देन इसके कोई और ऑप्शन आप बता के बताएं, इट इज द ऑप्शन इज अवेलेबल अदर देन दीज 3 ऑप्शन, ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इट शुड बी अ वेवलेंथ और द half wavelength or its integral number, and the oscillation with, again the other restriction is written over here, the oscillation of with n equal to 1, when there is 1, it is called the fundamental first harmonic. What is this? We are talking about this system, ठीक है। जब n की वैल्यू आपके पास 1 है तो ये first ये as a reference हम ले रहे हैं, so this will be the first, of course when the n is 1, that is the first case of the oscillation, and it of course it will be going to the higher values of n correspond to the higher harmonics, जितनी आप आगे जाएंगे हार्मोनिक्स हायर में हायर फ्रीक्वेंसी आपके पास है, तो दैट इज द actually the outcome. This is very important knowledge. Maybe I will ask one of them and ask you to prove why it is like having the half integral fits into the length of L. So in a similar way you have to describe what I have described in the class. तो ये आपको ये नहीं कि हो सकता है, maybe I will ask what is the outcome or assumption of the de Broglie equation, but more important is all these points are very important and having the valid reason. Maybe I will ask and one as a question and ask you to describe this one, how this is going to happen. Okay, तो आपने इसी तरह इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है, ये नहीं कि रट्टा नहीं लगाना, इसको जो देख के आपने याद करके आ जाए वो करें. इफ आई आस्क then of course you have to write down these are the 4-5 points which is the outcome or the assumption of the de Broglie equation. So next, actually this is very important and this we will further consider in the development of the electron microscope, जो कि नैनो मटेरियल्स के अंदर यूज करते हैं, जो हमें ये नजर नहीं आते पार्टिकल्स, we will use the electron microscope and this is based on the de Broglie equation, ठीक है. And now we are moving to the electrons. The first was we took as an example of the guitar to define some of the postulate of the de Broglie equation, actually how it is going to work. Now this is the real application of the de Broglie equation, and what is this? This diagram is about, this is the circumference. Let's suppose the central point is the nucleus and this is the first shell, सही है. K shell आपके पास है, similarly we have the L shell, N shell, M shell, ठीक है. तो ये सारे के सारे क्या है, सर्कुलर पाथ में आप इसी तरह पढ़ते हैं, मैट्रिक्स से आप इंटरमीडिएट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है. एंड इफ लेट्स सपोज दिस इज द हाइड्रोजन and we will consider further this example to further explore hydrogen or hydrogen like atoms here, and there is only one electron is present over there and this one electron is present in the K shell, nucleus है और आपके पास K shell है, और this if and this electron is moving rightly in a circular path, ठीक है, और and the distance between the nucleus to the K shell will remain the constant for the hydrogen. It may vary from the another because due to the binding of the electron with the nucleus. तो ये साइज जो है वो periodic trends आपको पता है
that is based on how the electrons are binded with the nucleus. It depends on the number of the charge or the quantity or the number of the electrons. The more will be the charge, more will be the attraction, then you have to, there is the possibility of the less charge, sorry, less size between the nucleus and the electrons. So here the important is this electron is only one electron is moving in a circular path. So how can we fit the de Broglie equation over there? So this is the circumference, and circumference, you know, this is the 2 pi r. Say 2 pi r is the circumference of any circle. Okay, this will remain this constant. This is the already the derived unit values. So let's see. Now we are going to define how can we link this circumference with the wavelength, because electron is moving, electron is the particle, and of course it is moving in this when it is moving in a circular path, and this is also showing the wavelength, and this wavelength is shown over here around the circle because this is the wave-like properties or the properties of the particle, and the particle in this case is the electron. Clear है ये? तो ये आपके पास जब ये move करेगा तो ये साथ साथ ये wave-like property भी देगा, because we have already proved this, the particle be also showing the wave-like property. अच्छा, अब आप बताएं यहाँ पे जो अभी हमने क्योंकि पिछली स्लाइड हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, what would be the wavelength, total wavelength of this circumference 2 pi r? How many wavelengths should be there? Wavelength आपके पास क्या है? ये आ ही गया चलिए. How many wavelengths should be there? It may be a one wavelength or integral of the wavelength. That is according to the de Broglie equation. बीच का रास्ता नहीं है, अगर 1.5 कहेंगे 1.5 कहेंगे, this is not going to end. एक पहले भी एग्जांपल आपको बताई जिसमें सर्कुलर में आपके पास जो है ये वेवलेंथ जो फिट आ रही थी, अगर उसको कहीं पे जो है वो उसका एंड नहीं हो रहा तो दिस विल कंटिन्यू. सो दिस शुड नॉट बी अ स्टेशनरी वेव, एंड that means that is not going to follow this assumption of the de Broglie equation. And this circumference, the total wavelength should be lambda or the n lambda. N is the n integral. It may be 1 lambda, it may be 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, 6 lambda. And lambda is having any number. Lambda की वैल्यू की बात नहीं कर रहे, अगेन आप अंडरस्टैंड है, वो वैल्यू 0.5 भी हो सकती है. Then 2 lambda should be 1. Sorry, 3 lambda should be 1.5 if the value of the lambda is 0.5. तो इसी तरह ये आगे जो है वो सर्कुलर रहेगा कि जो भी लैम्डा है वेवलेंथ है उसका जो है इंटीग्रल नंबर इसके ऊपर फिट आएगा. अगर वो इंटीग्रल नंबर नहीं है तो ये आपके पास जो है ये जो वेवलेंथ आपको शो की है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. हाँ, इसमें फुल वेव वो इसलिए कहा ना, उसको आप अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज ओनली फॉर दी स्टिंग्स जो आप उसकी हमने एग्जांपल दी. आपने एक ऊपर खींचा तो क्या बनेगी, एक ही हाफ ही वेव बनेगी ना, सही है. उस नॉलेज को आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द रियल पिक्चर ऑन द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ. वो स्ट्रिंग्स की बात, इसलिए बार बार वहां पे मैंने साथ साथ स्ट्रिंग्स लिखा हुआ. That means this we just first we are going to understand actually this, that was what the de Broglie visualized or did the experiment. That was according to him, and that's why we are teaching this one to take it as a reference to understand what is happening over here, to understand the wave-like property of the electron. बिल्कुल वहां पे हाफ है, सही है. एग्जाम्पल आपको बता दी, ऊपर एक खींचेगा हाफ ही बनेगी, सही है. फिर आप उसे छोड़ेंगे, ज्यादा करेंगे तो वो मे बी आपके पास पूरी आ जाए, मे बी 3/2 आ जाए, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर द स्पीड और द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन. यही हमने एक्सप्लोर किया. उसमें जितनी ज्यादा होगी उतने नंबर ऑफ नोड जो होंगे, और आके उसमें एंड ही होना है. अगर एंड होगी तो वो उसको फॉलो करेगी. हाफ लैम्डा, लैम्डा 3/2 लैम्डा, ऐसे ही चलेगा. अगर आप घर एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं. अगर नहीं होगा तो वो एंड ही नहीं होगी. एंड नहीं होगी, दैट मीन दिस इज नॉट पॉसिबल. क्लियर है ये. अब यहाँ पे ये है कि सर्कुलर पाथ के अंदर है, इसने पाथ अपना कंप्लीट करना है तो वो ये ही होगा. एक वेवलेंथ हो सकती है,
2 वेवलेंथ हो सकती है, 3 वेवलेंथ हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है. Again, lambda should be any figure, but n is important. N is the integral of the wavelength. We are not talking the wavelength should be the integral number of the wavelength. N should be 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. It is going to happen. So 2 pi r, that means the total circumference may be क्या हो जाएगा, lambda होगा for one type of the element, or it may be 2 lambda, it may be 3 lambda, it may be 4 lambda, it may be 5 lambda, and so on. So total, that's why we have written over here is a general. क्या होगा, n कुछ नहीं, n या तो lambda है, 2 lambda, 3 lambda. That's why we have written over here as a general formula to explain what should be the circumference of the electron moving around the nucleus, and this is in the angular movement. So according to the de Broglie equation, this we have already explained and derived the equation. Lambda would be h over mv. Mv is the momentum. So here I am going to replace the mass of any, like we have already calculated the mass of the tenors and the speed and the wavelength, okay? And here I am going to replace this mass with the mass of the electron, because I am now going to consider the movement of the electron in a circular path around the nucleus, okay? तो आपके पास, and this would be the, of course, the velocity of the electron. या बाबू, ये सेम वही इक्वेशन है जो पहले हमने ड्राइव की हुई, कोई इसमें नहीं है. क्लियर है ये? हाँ बच्चे आप बताओ. और ये इक्वेशन जो है, अगेन मैं कह रहा हूँ आगे आप साथ नहीं चलेंगे, ये इक्वेशन जो है आपने रजिस्टर के ऊपर अलग से एक पेज के ऊपर लिखते जाएंगे, फाइनल हम करते जा रहे हैं, ताकि कहीं आपको लेक्चर के अंदर आपको फौरन देखना पड़े, फौरन आप जाएं कि अच्छा ये इक्वेशन हमने की हुई. And this, all the videos are recorded, you can watch again if you like. So this we have already derived. Actually, this is the de Broglie equation, how the mass is related to the wavelength, wave-like properties of the particle. Okay? And now I'm going to place this is 2 pi r and this is the n lambda. Just I am putting the value of the lambda from the de Broglie equation into this equation. तो क्या हो जाएगा, n h over m e v. सही है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने ये लैम्डा जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास आ गई. नो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम, दिस इज जस्ट द मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम? मल्टीप्लाई बाय द रेडियस जो है. तो देखें रेडियस आपके पास इधर ऑलरेडी यहाँ पे है और मास और वेलोसिटी आपके पास है. ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीअरेंज, इसको इस तरफ ले आए और 2 पाई को नीचे डिवाइड कर दें. The equation will become like this. ठीक है, mvr equal to nh over 2 pi. So this is the angular momentum, and you can calculate the angular momentum of the electron moving in a circular path around the nucleus. और अगर आपको इंटरमीडिएट में याद हो, this is the same the Bohr absorption for the angular momentum, momentum of the electron. It should be momentum of the electron. If you call it, should be the angular momentum, because it is not the translational motion, it is the rotational movement of the electron around the circle. तो अगर आपको ये याद हो, Bohr assume जो किया हुआ, that is the same equation is coming from the what I have with the 3 steps we have derived over here. Okay? So this is the angular momentum. You can calculate the angular momentum. अब देखें यहाँ पे वेरिएशन क्या है. h is the constant, 2 pi is the constant, only the number is the variable. It may be 1, it may be 2, it may be 3, depending on what is the, this is coming from the integral number of the wavelength. सही, तो यहाँ पे आप कौन सी इसकी जो है वो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, उस हिसाब से इसका मोमेंटम जो है वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का वेरी होगा. अदर फैक्टर विल रिमेन द कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द फैक्टर. क्लियर? नाउ दिस द फर्दर मूवमेंट, एक्चुअली ये इसको मैं अप्लाई करूंगा. दिस इज
actually the updated knowledge. Currently we are working in this field, and this is the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो ये इसकी क्या एप्लीकेशन है जो अभी डी ब्रॉगली की हमने की है. दिस इज द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल. तो अभी आप जो चीज़ें देख रहे हैं ये किस रेंज में आप देख रहे हैं, आपकी आइज जो डिटेक्ट कर रही है इन द विजिबल रीजन. ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आपको नज़र नहीं आते, सही है, एटम्स आपको नज़र नहीं आते, अगर एटम्स को आपने देखना है तो फिर आपने इलेक्ट्रॉन लेवल के ऊपर उसको जो है वो स्टडी करना. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ द डी ब्रॉगली इक्वेशन. जो है आगे हम इसको फिर करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे. हाउ कैन वी एक्सिलरेट दिस इलेक्ट्रॉन टू गेट योर डिजायर वेवलेंथ. जो है सही है, ये इमेज कैसे आई, दैट मीन दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन दिस वन, कि इलेक्ट्रॉन से हम उसको जो है वो वेव जनरेट कर रहे हैं. दिस वी आर गोइंग टू अप्लाई टू विजुलाइज द एटम्स और द molecules which you cannot detect with your naked eyes. ठीक है, so this would be the application. Before going to the application, again this is the exercise. Right now you should calculate, or this is similar to what we have done before. चले करें शाबाश इसको. जो calculate the Broglie wavelength. अब ये अगर आप अंडरस्टैंड, अब दोबारा से मैं करवा रहा हूँ, ये आगे एप्लीकेबल होगा. इसकी आउटकम को हमेशा जेल में रखें कि एक्चुअली क्या है. ये सिर्फ कैलकुलेट करना पर्पस नहीं है. अगेन बार बार मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द मैथमेटिक्स. एक्चुअली वी आर लर्निंग द केमिस्ट्री, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द आउटकम कमिंग आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज. उसको लिखें अपने वर्ड्स में, कहीं पे उसको सेव करें, और फिर हम इसको जो है आगे मूव करते हैं. So calculate the de Broglie wavelength. Number A, an electron moving with the speed 1 exponent 6 meter per second, and the base ball of mass m is 0.145 kilogram through a speed of 30 meter per second. दोनों की wavelength आप निकालें, and then we will see what should be the comparison between these two wavelength. और ये wavelength आपको बताएगी. जी नहीं बच्चे, ये कैसे हो सकता है. मैस किसकी बात कर रही है. बेस बॉल्स का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस के कैसे बराबर हो सकता है. इलेक्ट्रॉन का मैस कांस्टेंट है. ठीक है, वो क्या हमने लास्ट टाइम बताया था, 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 34 31 किलोग्राम. दिस वाज द मैस. जब तक इलेक्ट्रॉन है मैस यही रहेगा. ठीक है, हाँ, ये बेस बॉल का चेंज हो सकता है. ये बेस बॉल का मैस ये कोई और लेते हैं तो उसका मैस वेरी करेगा. ठीक है, चलें शाबाश, जल्दी करके बताएं मुझे. वो लिखी हुई बच्चे, आप पीछे देखें. आपने पहले किया नहीं हुआ ये तो तीसरी क्लास में कर रहे हैं. क्लास आपने पीछे नोट नहीं किया, तो देखिए उसको बच्चे वो चीज पूछें जो नहीं आती. पहले इलेक्ट्रॉन का बताइए, फिर बेस बॉल का बताइए.
पहले कर लिया तो मुझे बताएं। क्या बताया आपने? -3 दोबारा। चलो आगे दूसरा भी करें। चलें आप भी करें शाबाश। जिन्होंने कर लिया सेकंड कर रहे हैं बेसबॉल जो ये सबसे ज्यादा है। 7 और 700 इलेक्ट्रॉन मूविंग 7 वेवलेंथ हो सकती है आप बताओ। वैसे लॉजिकल है कभी देखिए किसी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी 7 वेवलेंथ 7 मीटर जो है लॉजिकली इट इज पॉसिबल। हो ही नहीं सकता। देखिए इसमें भी आपके पास आपने किया था लास्ट जो घर जाके की है कैलकुलेशन। हाँ ये आपने क्या है इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड है कोई इसमें तो केमिस्ट्री का तो इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है तो मुझे बताएं कैलकुलेटर। दिस इज 7.3 x में -10 मीटर या 0.73 x में -9 मीटर। इट डिपेंड्स कि आपने क्या किया कुछ भी नहीं है। ये है दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर दिया। दिस वुड बी द आंसर। इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो बच्चे दिस इज अ सीरियस टेक इट एज अ सीरियस टू कैलकुलेट एट होम। क्या चीज एक सेकंड। हाँ इसका क्या करिए। अच्छा ये कैसे है मैं वो बाद में बता दूं पहले आप मैं कंफ्यूज हो गया पता नहीं क्या। सो दिस इज
एक्सपोनेंट -10 मीटर, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, उसकी भी बात करते हैं। एंड दिस वुड बी 1.5 एक्सपोनेंट -34 मीटर, यही आ रही है आपकी। एंड देन यू कैन कन्वर्ट इनटू एनी अदर यूनिट जो इसको मिलीमीटर में चेंज कर लें, इसको किलोमीटर में चेंज कर लें, ठीक है। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई इसको जो है वो डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो ये किलोमीटर में आपके पास आ जाएगा, लेकिन मैं इसको जो है वो बिगर यूनिट में लिख दूंगा। दिस इज द यूनिट ऑफ द एंगस्ट्रॉम, दिस विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंट -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम equal to exponent -10 meter. So this is more appropriate unit to use in case this is the very small wavelength. ये लिखने में भी कोई अर्थ नहीं, आप लिखेंगे this is 100% right, and this is more appropriate as compared to this, and just I am using the conversion to multiply with exponent -10, so this will be angstrom, ठीक है। तो उसमें इसमें कोई इसको भी एक्सपोनेंट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज जस्ट द कन्वर्जन बिटवीन द मीटर एंड द एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाना है तो उसका रिवर्स कर दें, इस तरफ जा रहे हैं तो उसको प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वरना इसको आप डिवाइड कर देंगे इफ यू आर मूविंग टू द अदर साइड। सो दिस इज एक्चुअली द, अगेन देयर इज द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू। The latter, this is too small to be observed, ठीक है। यही हमने लास्ट टाइम भी किया था। इट इज द मैक्रो ऑब्जेक्ट, so this is not possible to detect the wavelength of the baseball, but in case of the microscopic level, like the electron is moving and this is showing the wave like properties, and but the baseball is not, it is, you have calculated, but this is not detectable in any of the electromagnetic radiation. So that's why we are going to use electron as a electron microscope, वरना ये baseball microscope ही होता है, ठीक है। So there is no possibility to develop, or there is no utilization to develop such type of the microscope, क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं है वो। दिस इज द टू लॉन्ग वेवलेंथ, जितनी शॉर्ट आपके पास होगी उतनी वो ज्यादा रीजनेबल रेजोल्यूशन जो है उसकी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द इलेक्ट्रॉन टू हैव द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सिमिलरली ये इसके एग्जांपल और भी दी हुई हैं, जिनका नहीं है वहां से जाके ये, दिस इज द बुक फ्रॉम आई थिंक in one of the मैकमरन, ये कौन सी आपको बताई थी, ऑक्सटोबी, सही है, ये उसी में से आपके पास लिया, ऑक्सटोबी और रैमन चेंग की आपको बुक बताई। ये सारा मटेरियल ना उसी से, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम दिस टू, दोनों आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है, उसको जो पढ़ें उसके अंदर डिटेल है। फर्दर अगर आपने करनी है घर जाकर करें, खासतौर पे जिनके आंसर नहीं आ रहे, डू इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। So this is all about today's lecture. So see you in the next